चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम माय एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। This is episode number 49 and Santo Balakanda सर्ग नंबर 73वां, 73तम सर्ग, 73 नंबर सर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। सप्ततितम 73तम सर्ग। Janak escorted Dashrath and his 4 sons, clad in nuptial attire, to the pavilion erected for the wedding, placing Vishwamitra and Satananda ahead. Vashisthji conducted the marriage ceremony. Sri Ram and his 3 brothers clasped the head of Sita, her sisters, singing and dancing for joy. The god rained heavenly flowers on the birds and bird-grooms. राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा के कई राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कहा, On that very day, when the fat Emperor Dashrath performed the grand Samavartana ceremony, the valiant Yudhajita, the son of the ruler of the Kaikaya kingdom and Bharat's own maternal uncle, duly arrived at Mithila. Seeing the emperor and inquiring after his welfare, he submitted to him as follows. हे रघुनंदन, कई देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद है। हे राजेंद्र, कई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। My father, the sovereign ruler of the Kaikai territory, has out of affection inquired after your welfare and added that all is well at present with those whose well-being you desired. The king, my father is eager to see Bharat, my sister's son, O King of Kings. For this purpose I went straight to Ayodhya, O season of Raghu. परंतु हे पृथ्वीनाथ, अयोध्या में आपके साथ
अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहनी के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के योग्य थे। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। When, however, O king, I heard at Ayodhya of your sons, Bharat and Shatrughna, having proceeded with you direct to Mithila for the wedding of Sri Ram, I drove in haste to this place, eager to see my sister's son, seeing his beloved guest, Yudhajita, deserving of all honor, arrived in the presence. King Dashrath forthwith entertained him with utmost attentions. Then, having spent that night with his high-souled son, he got up again in the morning, and having finished his duties for the morning, the king, who had realized the truth, forthwith reached the pavilion erected for the wedding, placing the sages at the head. तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषाएं अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। प्लेसिंग अहेड सेज वशिष्ठ and other eminent sages too, and accompanied by all his three brothers, adorned with every movement, every ornament, Sri Ram, who was himself dressed in a festive attire appropriate to the occasion of wedding, also arrived at the hour known in astronomical works by the name of vidhya, so called because it is calculated to bring success to an enterprise undertaken during that hour. Propitious for a wedding, arriving there, the holy Vashisthji spoke to Janak, born in the line of the Vedeha, as follows. हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके इन सब के साथ पधारे हैं और आप भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह काल उपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। Along with his son, dressed in the festive attire appropriate to the occasion of wedding, O King Emperor Dashrath, as well among the foremost of men, awaits the pleasure of the donor. For all gifts take place only with the cooperation of the donor and the donee. Therefore, performing the noble rites pertaining to the wedding, discharge your sacred obligations of the redeeming the word given by you to King Dashratha. महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने
इस प्रकार उत्तर दिया। Request thus by the high-souled Vashisthji, the highly glorious Janaka, who was extremely noble and possessed the highest knowledge of what is right, replied as follows. हे मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार कर रहे हैं? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठे हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रहे हैं। Who stand at the door to guard my entrance, and whose permission does the emperor keenly await? What scruple should there be in entering one's own house? This kingdom is as much as yours as mine. Having gone through all auspicious rites connected with the wedding, my daughters, whose well among the sages, have already arrived at the foot of the sacrificial altar, looking like so many blazing flame of fire. इस समय तो मैं आपके ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? Firmly sealed on this altar, I am just waiting for you. Hence, let everything connected with the wedding be performed without any late or hindrance. What for is the ceremony actually being delayed? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्र और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। Hearing the aforesaid reply given by Janak, Dasharatha forthwith took his sons as also all the host of the sages into the pavilion erected for the wedding. तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मा महर्षि, प्रभु आप ऋषियों का साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। देखिए, राम भगवान के लिए क्या शब्द है? लोकाभिराम। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य मार्ग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं, यवक के अंकुरों से युक्त विचित्र कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, श्रुवा, श्रुक, अर्ध्य आदि पूजन पात्र, लावा, खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया गया है। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। Thereupon Janak, the ruler of the Videha kingdom, submitted as follows to the Vasishtha along with the other sages. O pious seer, conduct the nuptial ceremony of the Sri Ram, the delight of the world, my lord. लोकाभिराम का मतलब है the delight of the world. Delight of the world. Saying Amen to Janak
and placing Vishwamitra and the Poyas Satananda head, the holy sage Vashisthji, who was a great ascetic, prepared a sacrificial altar at the center of the pavilion according to the scriptural ordinance and decorate the said altar on all sides with the sandal paste and flour. He then provided it with pellets of gold and jar of the variegated colors containing spouts, as well as with the swallow earthenware cups also full of spouts, vessel for incense containing incense, conches serving the purpose of the vessel, strucks, large wooden ladle used for the pouring ghee on the sacrificial fire, and properly made of palasa or kadira wood about as long as an arm, with the receptacle at end of a size of a hand, and sarvas, smaller wooden ladle used for the pouring ghee into the struck vessel, brimful with water to be offered to a deity for washing the hands, etc., with all, as well as with the vessels full of parched grains of paddy, and smaller vessel as also with grains of unbroken rice dyed with the power of dried turmeric root, again best revering the altar with the blades of darbha grass equal in length, and placing the fire on it according to the scriptural ordinance, while reciting sacred texts. The high glorious Vashisthji, the foremost of the sages, poured oblations into it with due ceremony, with the recitation of sacred text. तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता जी को लेकर आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया, और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित हैं, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पवित्र पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। In the nowadays, how you got this type of wife? That is the Sita ji. Duly escorting after that Sita at dawn with all sorts of jewels, and having comfortably seated her before the scared fire opposite Sri Ram, the dominant of the Raghu's race, King Janak then spoke as follows to Sri Ram, the promoter of the Kausalya's joy. This Sita, my daughter, is going to be your helpmate in discharging your scared oblations. Take her hand in your own and accept her as your own. May God betray you. She is highly fortunate and will remain exclusively devoted to you, her husband, and will ever follow you as a shadow.
यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। इस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, हे महाबाहो, तुम अपने हाथ में सुतकीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब ने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुत्स कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। Saying so, King Janak forthwith transferred to Sri Ram's hand the water in his own hand, consecrated by the recitation of the sacred text, signifying his will to offer the hand of Sita to Sri Ram. At that time was heard the noise of celestial kettle drums, and there fell an abundant shower of flower rain by the gods and sages, exclaiming, Good, well done, having thus give away to Sri Ram his daughter. Sita, in the wake of water, held in his palm and consecrated by the recitation of mantra, give expression to his vow of bestowing the princess on Sri Ram. King Janak, filled with rapture, said to Laxman, Laxman, come along, may God betide you, except Urmila, being given away by me, taken her hand in your own. Let there be no loss of time. Having requested Lakshmana, thus Janak spoke to the Bharat as follows, clasp the hand of Mandavi with your own, O season of Raghu, the pious king of the Mithila. Further said Shatrughna, take in your hand, O mighty arm prince, the hand of Srutkirti. You are all gentle and have all duly observed scared vows of Sally, Besi, etc. राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण हुआ। Let yourselves be married, O season of Kakutsa. Let there be no delay. Hearing the request of Janak, all the four princes who follow the direction of Vashisthji grasped with their hand and the hands of the four princes, going clockwise round the sacrificial fire, the altar, as well as round Janak and the sages too, the high-souled princes, the jewel among the Raghu, along with their birds, thereupon went through the wedding ceremony in the accordance with the correct
procedure as laid down in our scripture. उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुबियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म को संपन्न किया। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। Accompanied by the loud beating of celestial cattle drums and the melodious sound of the vocal and instrumental music, an evident and most splendid shower of blossoms fell from the heavens. Nay, behave of celestial nymph dance and the Gandharvas sing in the sweet voice. That was a marvelous phenomenon which was noticed during the wedding of the jewel of Raghu's race. While such a celestial consonance of sound prevailed with its echo, those highly glorious princes went found the sacrificial fire thrice and married their respective bride, accompanied by their consort. Those seasons of Raghu then retired to their tents. The emperor too, with the host of Rishi and his relations, followed suit, beholding with joy the birds and the bridegrooms. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 373 सर्गः सम्पूर्ण. Thus the end of Canto 73 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. इस एपिसोड में सबसे बढ़िया वाक्य क्या है? हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you very much. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.